नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू हरिदास कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, बहुत समय हो गया कॉन्वर्सेशन लेकर आने के लिए क्योंकि मौका नहीं मिल रहा था और आज मौका भी है और दस्तूर भी। 18th ऑफ मई पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। अब म्यूजियम डे की बात आती है तो हम बहुत ही खास व्यक्ति से भी मिलते हैं जो हमें इस विषय पर बहुत अच्छी और दिलचस्प बातें कर सके हमारे साथ। मेरे पास वाले स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं, हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ी हैं शेफालिका जी अवस्थी, जो भुज म्यूजियम की क्यूरेटर हैं। तो चलिए इस विषय पर आज उनसे मिलते हैं और जानते हैं बहुत सारी नई बातें कुछ अलग से अंदाज में। सो वेलकम टू हरिदास कॉन्वर्सेशन शेफालिका जी। Thank you so much. Thank you. तो इस बार की जो थीम है, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि ये जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है वो कुछ आज या कल से नहीं सेलिब्रेट हो रहा है। ये 40 सालों से भी ज्यादा समय हो गया इसे सेलिब्रेट होते हुए और करीबन 40,000 म्यूजियम दुनिया भर के इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। 160 के करीब देश हैं, वो लोग इसमें शामिल होते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार आफ्टर द कोविड बिगिनिंग द न्यू एरा न्यू नॉर्मल, बहुत सारे टर्म्स हम इस 2022 को यूज कर सकते हैं, तो जो थीम है पावर ऑफ म्यूजियम, उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी होगी? Uh, देखिए रीता जी, पहले तो I would like to thank you for intervening me on the occasion of the National Museum Day that is falling on 18th of May. And where is the power of museums is concerned, जैसा कि आपने अपने उसमें बताया ही है कि for the last more than 40 years we are celebrating Museum Day. So International Council of Museum, it's a non-governmental institute, is celebrating the Museum Day, which was every year on 18th May since 1977. And every year they come up with a theme which is somehow related with the museums, and all the museums across the world, they celebrate this Museum Day on that special title or that special theme. So this year in 2022, ICOM has given the theme the power of museums. So whereas the power of museum is concerned, so museums, they are very important source in preserving our past. They are very important source in preserving our heritage and culture, and they open our minds to the new ideas, which is very important. And there are so many essential steps which are required for building a better future. If you if I can talk in general, then you see that museums, they are the centers of informal learning. Earlier, they were centers of informal learning, but there is the time is changing. They have become the centers of formal learning as well. So there are so many things which can be done in whereas the museums are concerned. It is not only the thing that they are preserving our tangible heritage, they are preserving our culture also, and they are preserving it so that they can pass it to the next generation. And if you want to understand the identity of any particular country, if you want to understand the country's culture, museums are the places where you always look for. So obviously, the museums are very powerful, and they explore the potential, whatever is there in the society, and they bring about the positive changes, I must say, in their communities. So earlier it was only about the art and artifacts, but now it is also about the involvement of the community uh, the artworks belongs to. ओके, सो यू से द म्यूजियम इज स्टिल पावरफुल। हम अगर म्यूजियम की बात करें तो स्कूल के पिकनिक्स याद आते हैं जब वहां पर ले जाया जा रहा था और वहां पे राजा रानी की कहानियां कहीं ना कहीं हमें रिलेट होती थी। अगर उस समय से लेकर आज आज की बात करें, जहाँ पे सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, सो किस हिसाब से बदलाव आया है? अगर आज की उसमें देखें, वहां से लेकर यहाँ तक की जर्नी देखें, और किस हिसाब से वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्या वही वो हिस्टोरिकल चीजों के आसपास ही कहीं घूना हुआ है या फिर उसका स्कोप और भी बड़ा है? देखिए, जैसे आपने कहा कि शुरुआत में जब स्कूल और कॉलेजेस से टूर्स वगैरह होते थे, म्यूजियम्स का होता था, तो ये सारी बातें हो सकता है 20-25 साल पहले की हों या उससे पहले की हों,
Nowadays also the schools, they are getting conducted the tours of the museum, but over a period of time, the role of museum has changed tremendously. The definition has changed. सबसे पहले definition क्या होती थी कि the museums, they are the centers who collect, who conserve, who restore, and they are non-profit making institutes. It has changed. Although they are collecting, they are documenting, but now they are also the profit-making institute. That is a different thing altogether. Museums, they are supposed to generate the revenue. Otherwise, how they are going to function? And it is very minimal. So what I'm trying to say that their role has also changed over a period of time. किसी समय वो अजायब घर कहे जाते थे. I remember during the British period when this sort of revolution came into existence, and it was very much into the stream in the 19th century when the first museum of India came into existence. That time, the whole idea behind was to preserve and to conserve the material heritage so that the culture or the identity of any country can be preserved. But as the time passes by, a lot of things have been changed. पहले क्या होता था, सिर्फ लोगों को दिखाया जाता था कि ये उनका कल्चर है, ये उनका पास्ट है. म्यूजियम्स उसमें बहुत सारे ऐसे भी एक्टिविटीज करते थे कि अगर लोग म्यूजियम्स के पास नहीं आ पा रहे हैं तो they used to put the replicas of the objects into a van, and they were known as mobile museums or mobile exhibitions, and they try to reach out to the people who were in remote areas or in the villages. पहले तो सिर्फ ये था उनको ज्ञान देना. Nowadays museums are too much into the service of the society. They are very much getting connected with the communities. We are conducting so many activities which are not only focused on one particular strata of the society. We are doing the activities for children, we are for adults, for housewives, even for the senior citizens. So every people of the society, they are getting connected, and we connect them through the activities. So the basic thing is that museums are the centers of learning. They are imparting education in an informal way. It was a previous definition. But nowadays, museums, they are conducting the courses, the diploma courses, the degree courses, short-term courses, activities करते हैं, educational करते हैं, बच्चों को लेकर के करते हैं, competitions करते हैं, अपनी collection को digitalize करते हैं, publication है, lot of research. People do research, people do PhD based on. So over a period of time, the concept has changed. Although the students, they are still coming, but we are offering lot many things like we were doing earlier. So that is so it's drastic. not. Yeah, so in other way, the museum nowadays evolved, and also it's not just the part of the tourist attraction on the tourist leaflet or the pamphlet. It's in a way a knowledge house where anybody can just walk in. As per their interest, they can find the corner, they can deeply relate to that thing. So अगर एक बहुत ही छोटा सा अगर एक not a compare, but if we look किस हिसाब से इंटरनेशनल म्यूजियम्स और भारत के म्यूजियम्स है वो एक दूसरे से सिमिलर है और डिफरेंट भी है? देखिए, सिमिलैरिटी की अगर जहां तक आप बात करें तो कलेक्शन तो जो है वो सभी जगह पे वही वगैरह होगा. हो सकती है, बट द थिंग इज कि when they started opening the museums in our country in early 19th century, it was a new concept for India. India was not independent at all. So that time they were 100 years ahead from us. This In is my terms of personal keeping the things opinion. and preserving the Yeah. things. They are very much into क्योंकि बस कोई छोटी सी भी चीज होगी ना, if there is a replica also, वो उसको इतना ज्यादा सजाकर उसके बारे में इतनी सारी information, they are so much research oriented, and they always keep on adding new things ताकि किसी को ये ना लगे कि 100 साल पहले या 20 साल पहले हम आए थे तब भी म्यूजियम में यही था, अभी हम 20 साल बाद आ रहे हैं तो भी म्यूजियम में वही है. So they are very enthusiastic, and it is not the thing that I'm cribbing about or something about us. It's not that, because if we keep cribbing about, we are definitely going to lose the charm of it. So I'm just trying to
A fine thin line point out which a is fact. positive thing. Yeah, that's what I'm Positive saying. A thing. fine thin line which is true and which can be, it's a clear line between these two things. Correct. But whereas our Indian museums are concerned, I think in every region there is so much of things to offer, not only in terms of geography, but in terms of हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा जगह नहीं होगी जहां पे आप जाएं आपको उससे रिलेटेड कोई पौराणिक कथा ना मिले, आपको बिल्कुल उससे रिलेटेड वहां पे कोई कहानी ना मिले. तो हमारा जो कल्चर है वो इतना ज्यादा रिच है, इतना ज्यादा वास्ट है. उत्तर बिल्कुल दक्षिण से अलग है, पूरब जो है वो बिल्कुल पश्चिम से अलग है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर, जो मुझे लगता है कि बाहर के देशों में शायद उतना विविधता नहीं होगी. और अगर मैं इस बारे में कुछ गलत कह रही हूँ तो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन हमारे पास विविधता बहुत है. आप स्कल्पचर्स में देखें, आप लिटरेचर में देखें, आप पेंटिंग्स में देखें. मधुबनी पेंटिंग साउथ इंडियन पेंटिंग से अलग होगी, कांगड़ा शैली जो है वो मुगल शैली से बिल्कुल अलग होगी. तो यहाँ पर बहुत कुछ है जिसको सहेज तो हम लोग रहे हैं, बट आई फील दैट at other nations, I think the public is also very concerned about their heritage. They are also very concerned about their culture, and it is a I think कि बहुत इस समय जरूरत है कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करें. And I'm not talking about the material culture. I'm talking about the intangible culture. I'm talking about the intangible heritage like language. I'm या talking about food habits. वस्त्र हैं, परिधान है, भाषा का. मुझे कई बार लगता है कि हमारी भाषा कहाँ चली जा रही चलिए है. हाँ अर्लियर इट वाज पहले समाज में कुछ टैबू टाइप की चीजें होती थी. नाउ पीपल आर यूजिंग स्लैंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट. सो आई थिंक इट इज अ ग्रेट नीड फॉर एवरीवन टू प्रिजर्व, एंड आई अर्ज पीपल कि ये हमारी संस्कृति है, बहुत रिच है, पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है इसी बात को लेकर के. तो हमें सब कुछ प्रिजर्व करना चाहिए, अदरवाइज समय के साथ वो चीजें कहीं कहीं मिटती चला जाती है या कहीं भूलते जाते हैं. जी म्यूजियम से. चलिए टैंजिबल हेरिटेज प्रिजर्व कर लेंगे, इंटेंजिबल को करने की जिम्मेदारी हम सबकी है. बिल्कुल. तो कहीं न कहीं आपने मैसेज भी दे दिया. अगर मैं आपके मैसेज की बात करूँ कि आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगी, बट उसमें आ गया. जाते-जाते बहुत ही संक्षिप्त में हम लोगों को आपका परिचय भी करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत दिलचस्प बात की, बहुत अलग-अलग पहलू को हमने संजोने की कोशिश की समय की मर्यादा में. अगर संक्षिप्त में आपका परिचय लोगों से अच्छी तरीके से करवाएँ तो क्या होगा? Till the time people must be knowing that I'm Dr. Shefalika, That's working why as I took it in the curator. last question, because it's like a curiosity, like who the person is. It's a different approach altogether. I like it. So I'm working as curator in Kutch Museum Bhuj, government of Gujarat, and I was born in Fatehpur. It's a district in Uttar Pradesh. And my parents, both of them, they were academicians. My father was professor and head of the Hindi department in Kanpur University. And my mother, she was a principal in girls' college. So both of them, they were government employees. I did my education, schooling in Fatehpur, and graduation, then post-graduation in ancient Indian history and culture from Kanpur, from Allahabad. Then I did my master's, second master's in museology from MS University of Oh. Baroda. And then I did my PhD, which is based on Bhagavad Puran Dashamaskand paintings from Rajasthan University, because I have worked in Rajasthan, Jaipur for almost 6 years. Uh-huh. And before that, I started my career from Bombay as a Oh. technical assistant in Bhavdaji Art Museum. And after 9 months, I got a chance to work as curator in Marine Museum Nava. From Nava, it was Jaipur for 6 years. And in 2017, I got my posting as curator in Government of Gujarat. And one thing I would like to tell people from your platform, that every time we talk about the freedom of speech, we talk about the liberty, we talk about कि हम कुछ भी कह सकते हैं, but I request people कि freedom comes with a great responsibility. So whatever you please do, please keep that responsibility in mind and then do something. So please understand your responsibility.
Yes, so I totally agree with what you said and also so many of the things. शिवालिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल म्यूजियम डे को हम सिर्फ वो म्यूजियम की जो कन्वर्टेड जो लोग देखते हैं उससे बहुत बाहर लेकर हम बात कर रहे हैं, बहुत अलग पहलू को लेकर बात कर रहे हैं। एक छोटे से जगह से लेके इंटरनेशनल लेवल तक की हमने बात की। बहुत अच्छा लगा आपसे। और जितने भी दर्शक आज देख रहे हैं या फिर पीछे भी इसको देखेंगे, आपसे एक गुजारिश है कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके आसपास कहीं पर भी म्यूजियम हो, तो आप उसकी मुलाकात लीजिए। और सिर्फ ऐसे टूरिस्ट के तौर पर नहीं, लेकिन वहां पर क्या चीज संजो कर रखी हुई है, कौन सी संस्कृति, कौन सी कथाएं, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, उसके बारे में नोट कीजिए और बिल्कुल शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे साथ। आप कमेंट में डाल के हमें भी आपके अनुभवों के बारे में बता सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। शेफालिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और इस दिवस के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ। नमस्कार।